management, because I feel that if you want to clear this examination in first attempt, the first thing that you need to manage is your time. यू कैनॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम. वो यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देख के टाइम वेस्ट नहीं करना. आईएएस आईपीएस की शादी हो रही है, आईएएस एंट्री आईपीएस एंट्री हो रही है. डू नॉट वेस्ट टाइम अपॉन दैट. यू नो, everybody has that experience. Even I used to watch those videos when I was in second or third year. But you must become mature to clear this examination. Study plan wise, I mean, अगर आप लड़ने जा रहे हैं, then you must have a strategy, you must have a plan. So what I did was I delineated my whole plan into 6-month, monthly, weekly and daily plans. And irrespective of how many hours I have to give, मैं ट्राई करता था कि उन टॉपिक्स को जो भी मैंने डिवाइड किए हैं उसको मैं कंप्लीट करूँ उस डे पे. तो ये मेरा एक ब्रॉड स्ट्रेटजी था. ये मैंने जो टॉपर्स के वीडियोस हैं उनसे. सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. There is no substitute for 8 to 10 hours of self study, irrespective of whether you are doing coaching or not. तो दूसरी चीज़ ये है, you have to remain consistent. बहुत लोग क्या होता है कि एक दिन उन्होंने 12-13 घंटे पढ़ाई किया, अगले दिन एकदम मौज काट लिए, घूम लिए. Then I think this is not done. You have to be consistent in your study. Then only that will produce result. Motivation. Now बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि I get bored while studying, मोटिवेशन कैसे लाए. तो वही then turn to the Instagram and YouTube, और कब सुबह हो जाती है रात से पता नहीं चलता है. So avoid that thing. The only source of motivation is you. Internal motivation is the only source. Ask yourself this question: why are you here? Then only you will be able to clear this examination. As far as coaching institutes is concerned, I too think that is a personal choice. For me, there was no guidance available, and I was in the fear of missing out. I joined a coaching, and that might help you if you are giving 8 to 10 hours of self-study apart from the coaching time. There is nothing can substitute the hard work and the self-study. So you can join coaching if you do not have guidance and you need coaching, but otherwise self-study. Avoid time waste at all cost. बिकॉज यू नो घर में बहुत पैसा है, यहाँ पे आओ तो अलग बात है, टाइम वेस्ट कर सकते हो. अदरवाइज सी यू हैव टू बी वेरी क्विक. अदरवाइज 10 लाख लोग हैं इस फील्ड में. कंसिस्टेंसी 10-12 घंटे, 10 घंटे तो काफ़ी ज़्यादा हो गया. 8 घंटे भी डेली सेल्फ स्टडी इफ यू आर डूइंग, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. यू आर इन द टॉप 1% ऑफ दिस होल यूपीएससी क्राउड. And then delineate the topics as well as the syllabus that you want to cover in these 4 months, in these months. For example, let's say in October I have decided to cover society and governance of mains topic. Divide those subtopics into weekly and daily plan, and then achieve those topics, achieve that plan at any cost. जब कुछ भी हो जाए करना है, 10-12 घंटे पढ़ने पड़े, but आपको पढ़ना है. College is not only about studying, it is about developing your personality, और वो personality will get reflected in your interview, right? So do a lot of internships, participate in extracurricular activities, explore the life. और हाँ, mind बनाना बिल्कुल सही है, and then start preparation in final year. Avoid making a large peer group among UPSC aspirant. I have only one friend in UPSC aspirant and he too is from Jaipur. So what the benefit ये होता है कि आपका time waste नहीं होगा, right? You will not get distracted. आप बाहर निकल के इधर उधर के एक्टिविटीज़ में कम लग के पढ़ाई पे फोकस करोगे. And if you want to extend your stay for a long period of time, पंचवर्ष योजना बनाना है, then you can indulge in time waste. Otherwise, be very careful. I mean, जिस लिए आए हो वो करो यहाँ पे. Year of